Hello everyone, myself Manas Mishra and you are watching Code with Manas YouTube channel. So let's start. So guys, in this video I'm going to show you the use of the pass statement. So let's start. So सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर लेता हूँ. लाइक मैंने ले लिया x is equals to integer input, enter the value. ओके, मैंने यूज़र को एक इनपुट स्टेटमेंट दे दी. नाउ आई विल टाइप इफ x I can use if x is greater than 50, then PASS. I will use the pass statement, and else it will print hello world. Hello world. So let's check it out, guys. Okay, so I have to enter a value under 50, like 12. No, it will be 21. Yes, 21. Then the output will be hello world. But if I enter, just a second, it's advertisement. Yes, if I enter a value that is above 50, then it will give output none. It will don't give us error, but there will be no output given by in the output box. So guys, I hope you understand the use of pass statement. I will just tell it in Hindi. Like देखिए, पास स्टेटमेंट बस इसलिए यूज़ किया जाता है. लाइक मैंने एक जनरल वे में एक इफ स्टेटमेंट लगाया, उसमें आप जनरल वैसे तो कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल के लिख ही देते होंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि हमको कोई भी आउटपुट ना मिले बट एरर भी ना है, देन आप पास स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, एंड इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.